डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 7 में लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे। ये टॉपिक आने वाले टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बेसिकली रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हम सीख सकते हैं। रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लेक्चर 6 में रैंक निकालने के तरीके सीखे थे। रैंक को निकालने के मैंने आपको दो आसान तरीके बताए थे। फर्स्ट वन इज एशेलॉन फॉर्म और दूसरा था नॉर्मल फॉर्म। एक क्वेश्चन की मदद से हम दोनों ही मेथड का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हम लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी जो वेक्टर्स की है उसको समझ पाए। For example, let a matrix A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Find the rank of matrix. Find the rank of matrix. मैंने आपको दो तरीके बताए थे। फर्स्ट वन वाज एशेलॉन फॉर्म एंड सेकंड वन वाज नॉर्मल फॉर्म। हम दोनों ही तरीके से इसको निकालने का आपको तरीका बताते हैं। So using echelon form, using echelon form, echelon form का एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज A11, A12 and so on, A21, A22 and so on, and this is ANN and so on. It can be any m cross n matrix. So echelon form में हम क्या करते हैं, A11 की हेल्प से उसके बिलो एलिमेंट्स को हम जीरो बनाते हैं। जो भी एलिमेंट्स इसके बिलो हैं उनको जीरो बनाते हैं। इसको 1 बनाना है कि नहीं बनाना है ये ऑप्शनल है। This is optional in the echelon form. If you are going to find row reduced echelon form, then making 1 is compulsory. ये जीरो कैसे बनाते हैं? With the help of row operations. With the help of row operations आप इसे जीरो बना सकते हैं। Similarly, आप दूसरा लीडिंग एलिमेंट A22 लेते हैं, उसके बिलो के सारे एलिमेंट्स जीरो बनाते हैं, और यही प्रोसेस आप बाकी सभी लीडिंग एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। विद द हेल्प ऑफ रो एंड रो ऑपरेशंस आप इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एशेलॉन फॉर्म की कंप्लीट डेफिनेशन आप लेक्चर 6 में देख सकते हैं। तो चलिए इस एल्गोरिथम से हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। So the matrix was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पहली एंट्री है A11। इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं A21, A31 जो कि पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो कर सकते हैं। रो ऑपरेशन लगा दें, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 minus 4R1 and R3 replaced by R3 minus 7R1. So a equivalent matrix will be, मैंने equivalent matrix भी लेक्चर 6 में आपको बताया है। 1, 2, 3, 0 आप चेक कर सकते हैं, ये -3, -6, 0, -6, -12 आएगा। अब आपके पास में दूसरा जो लीडिंग एलिमेंट A22 है, दैट इज -3। इसको 1 बनाना है, ये ऑप्शनल है एशेलॉन फॉर्म में, आप बनाएं या ना बनाएं।
अब इस -3 की हेल्प से हम इसके नीचे का जो एलिमेंट है उससे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो -6 को -3 की हेल्प से 0 कैसे बना सकते हैं? R3 रिप्लेस्ड बाई R3 -2R2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 आ जाएगा, सेम साइन है इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स विल बी 1 2 3 0 -3 -6 0 0 0। ये अभी हमारे पास A330 है, इसलिए इसको कुछ भी अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये अभी मैट्रिक्स जो हमारी है वो रो, ये मैट्रिक्स हमारी इस्लान फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इस्लान फॉर्म। आप डेफिनेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल द 0 रोज आर इन द बॉटम एंड द लीडिंग एलिमेंट जो है वो है आपके लीडिंग एलिमेंट मिल रहे हैं, उनके राइट में आपको 0 मिल रहा है। इधर जो भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट में आपको लीडिंग एलिमेंट मिल रहा है दूसरे और तीसरे और चौथे रो के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में रैंक ऑफ ए का तरीका मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज हमारे पास 1 to 2 है, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है। अब इसी क्वेश्चन को मैं नॉर्मल फॉर्म की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूं। नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A1n, suppose this is AM1, AMN, M क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसको आप यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन यू कैन अप्लाई बोथ द ऑपरेशन। आप इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ऑफ ऑर्डर R. Order R means identity matrix of R cross R order. Obviously R is the minimum of m comma n, less than equal to minimum of m comma n. तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो रैंक होगी that will be equal to R. तो हमें जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। आप दोनों ही ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो देखते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसको हम कैसे बदल सकते हैं। मैट्रिक्स A is given to you 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ट्रिक याद रखिएगा कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं। A11 को आप पहले 1 बनाइए, फिर A11 की हेल्प से सारे बिलो एलिमेंट्स को आप 0 बनाएं यूजिंग रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस और इसी एलिमेंट की हेल्प से आप इस कॉलम इस रो के एलिमेंट इस कॉलम के एलिमेंट आप 0 बना ले रो ऑपरेशन से, और इस रो के सारे एलिमेंट आप 0 बना ले यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। सिमिलरली आप A22 के लिए करेंगे, नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाएंगे रो ऑपरेशन लगाकर, और रो के सारे एलिमेंट 0 करेंगे यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। और इसको 1 बनाना मत भूलिएगा क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस विल गो टू कंटिन्यूअसली जब तक कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना लेते हैं। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये 1 हमें दिया गया है, अगर 1 नहीं दिया गया होता तो इसको हमें 1 बनाना पड़ता। अब हम इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे पहले रो ऑपरेशन से। तो पहला कॉलम 0 करेंगे एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट, सो R2 रिप्लेस बाय R2 minus 4R1 and R3 replaced by R3 minus 7R1. So A is equivalent to 1 2 3 0 minus 3 minus 6 0 minus 6 minus 12. Now we will make 2 and 3 0 with the help of column operations. So C2 replaced by C2 minus 2C1 and C3 replaced by C3 minus 3C1. So A will be equal to equivalent matrix 1 0 0. First column is not going to be changed. 0 0
-3 -6 -6 -12। अब हमें इन एंट्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये सारे एलिमेंट 0 हैं, सो केवल यही एलिमेंट चेंज होंगे। अब आप इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए आप रो में भी -3 का डिवाइड कर सकते हैं, रो 2 में, या कॉलम 2 में भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय -1/3 रो 2। सो ए विल लुक लाइक नाउ 1 0 0 0 1 2 0 -6 -12। अब ये 1 आ गया, इसकी हेल्प से ये बिलो एलिमेंट को 0 बनाएंगे। सो R3 replaced by R3 plus 6 R2. R3 replaced by R3 plus 6 R2. Now A will look like 1 0 0 0 1 2 0 0 0। अभी इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बना सकते हैं। So column 3 replaced by column 3 minus 2 times column 2. So it will be 1 0 0 0 1 0 0 0 0। सो आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, जबकि इसके अंदर जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है वो एक किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, I2 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। सो रैंक ऑफ A इक्वल टू। सो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, जबकि इस्लाम फॉर्म से आप आसानी से रैंक निकाल सकते हैं। तो इस रैंक की हेल्प से ही हम वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को चेक करेंगे। So what is ordered and tuple? What is ordered and tuple? You have studied ordered pair in class 10 plus 2. Similarly, ordered n tuple is defined as a set of n numbers. I am going to write E1, E2 up to En, in which a set of n tuples E1, E2, En, in which position of each number is fixed. It's called ordered n tuple. Ordered n tuple. For example, ordered pair you have studied 1, 2. It's a 2 tuple. 1 5 7. It's a 3 tuple. And so on. This is suppose 10. This is a 10 tuple number. What is n vector? Any ordered n tuple, any ordered n tuple of numbers in column form is called n vector. It's called n vector, such that we represent as E. And suppose this is equal to E1, E2, En, and this is a row form. So take the transpose, it will be the column vector. Or we can write like this: E1, E2, En. This is a column vector with row n and column 1. Here E is called an n vector. E is called an n vector. For example, 1 2 3 transpose, or matrix form 1 2 3 is a column vector of 3 cross 1. Next, what is the linear combination of vectors? Let E1, E2, Em
are n vectors, means cardinal, each vector is n cross 1 matrix. E1, E2, Em are the vectors of column vectors of order n cross 1, and C1, C2, Cm are scalars, are coming from some field. What is field? We will discuss later in the topic vector space. It can be any real number or any complex number. Scalars are coming from some real number or scalar number or any field. Then linear combination of vectors is defined as C1 E1 plus C2 E2 plus Cn En. This is the linear combination of Cm Em vectors, and all the vectors are column vectors of order n cross 1. Means E1 is also in the form of E1 En, E2 is also in the form of E1 dash, E2 dash, En dash, and so on. Em is also in the form of E1 M minus 1 dash, E2 M minus 1 dash, and so on. Em M minus 1 dash. All the vectors of order n cross 1. All the vectors of order n cross 1. So this is called linear combination of vector. For example, write the linear combination of E1 is equal to 1, 2, 3 transpose and E2 equal to 4, 5, 6 transpose. You can see that E1, E2 are the vectors and of order 3 cross 1. So order of each vector must be same for the writing of linear combination. So linear combination is defined as C1 E1 plus C2 E2. It will be C1 1, 2, 3 plus C2 4, 5, 6. So it will be C1 plus 4 C2, 2 C1 plus 5 C2, 3 C1 plus 6 C2. So this vector is called linear combination of L dot C of E1 and E2 for some scalars C1 and C2 are coming from any given field of real number or complex number or any given field. What is the definition of linear independent and linear dependent vectors? This is linear independent, and this is linear dependent. So let linear combination of vectors E1, E2, Em is written as C1 E1 plus C2 E2 plus Cm Em equal to 0. 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में एलडी है तो किसी एक वेक्टर को आप बाकी सभी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
तो वो जब राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट में तो वो जीरो हो जाएगा, जब क्योंकि एक वेक्टर इक्वल होगा दूसरे वेक्टर के, तो अगर उसको इक्वेशन फॉर्म में हम लिखेंगे तो राइट साइड में हम जीरो करके उसे अरेंज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दिस लीनियर एलआई एंड एलडी। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या डेफिनेशन और कैसे हम एलआई और एलडी चेक कर सकते हैं, ये टेबल तक हमें यही देखना है। अदरवाइज इसको प्रूफ जो है वो देखने का तरीका वही है कि हम एज्यूम करेंगे कि एक वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया अदर वेक्टर के, तो उस वेक्टर को हम जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो राइट साइड में ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। सो कैसे करेंगे इसको, कैसे अगर लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया C1 E1 plus C2 E2 plus CM EM equal to 0, if all scalars C1 C2 CM are 0, then vectors E1 E2 EM are linearly independent. If at least one CI is non-zero for any I 1 to n 1 to m, अगर इनमें से कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाता है, then vectors E1 E2 EM are linear dependent. So this is the definition. With the help of linear combination you can check vectors are LD or Li. But ये जो ट्रिक है ये हमें मैप करती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। ये लीनियर कॉम्बिनेशन टेक्निक से अगर हम LD और Li चेक कर रहे हैं, इट मींस वी आर एंटरिंग इन द टॉपिक ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट अभी मैंने वो नहीं सीखा है, तो हम कैसे चेक करेंगे वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, इसके लिए हम रैंक मेथड का यूज करेंगे। तो मेथड्स टू फाइंड LD एंड Li। सो पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज रैंक मेथड। रैंक मेथड, लेट E1 E2 EM are n tuple vectors, then write a matrix A with the help of E1 E2 EM. Write E1 E2 EM in the column because these all are column vectors. So M column and n rows, so order of this matrix will be n cross m. N and m can be equal also, then it will become a square matrix. Now if rank of A कहीं किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस्लॉन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, माइनर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको लेक्चर 6 में सिखाया है, नॉर्मल फॉर्म की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स m है और हर वेक्टर n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, then vectors are linearly independent. Then the vectors are linearly independent. What about if rank A is not equal to m? If rank of A is less than number of given vectors, here I am giving m, then vectors will be linear dependent. Then vectors will be linear dependent. एक एग्जांपल देखते हैं कैसे चेक कर रहे हैं रैंक की मदद से हम। चेक वेक्टर्स E1 1 2 3 ट्रांसपोज ऑलवेज कॉलम वेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। E2 4 5 6 ट्रांसपोज एंड E3 7 8 9 ट्रांसपोज।
is LD, sorry, R, LD, R, Li. Check that the vectors are LD, R, Li. So इन vectors को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इनको हम कॉलम फॉर्म में लिख देंगे. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So सबसे आसान तरीका रैंक निकालने का जो है, रैंक की मदद लेंगे. यहाँ 3 वेक्टर में दिए गए हैं. क्या तरीका है? इस्लान फॉर्म से हम इसकी रैंक निकाल लें. इस्लान फॉर्म कहता है कि पहली एंट्री की हेल्प से आप उसके डाउन एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए. So R2 replaced by R2 minus 2R1, R3 replaced by R3 minus 3R. So A will look like R1 is not going to be changed. 0, 5, 8 minus 3 minus 6, 0 minus 6 and minus 5 और 3, 3, 6, 4 12, 12. Now with the help of this entry डाउन एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे. जो भी हमारे लीडिंग एलिमेंट हैं आप उनके डाउन को 0 बनाने की कोशिश करिए. दिस इज एस्लॉन फॉर्म. So R3 replaced by R3 minus 2R2, 1, 4, 7, 0 minus 3 minus 6, 0, 0, 0. So rank of this matrix is 2 because there are 2 non-zero rows. Less than number of vectors, जो हमने vectors दिए हैं वो 3 है actually. So given vectors are linear dependent. Given vectors are linear dependent. एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी पर बेस्ड. चेक E1 equal to check E1 equal to 3 check E1 equal to 3, 1 minus 4, 3, 1 minus 4 and E2 equal to transpose, this is a column vector, 2, 2 minus 3 are LD or Li. Check LD or Li. So make the matrix A. Matrix A is equal to 3, 1 minus 4, 2, 2 minus 3. अब हम इसको इस्लान फॉर्म में चेंज करेंगे. तो इस्लान फॉर्म के लिए अगर ये पहला एलिमेंट 1 मिल जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बट कंपल्सरी नहीं 1 हो. बट हमें नीचे वाली रो में 1 मिल रहा है, इसलिए अभी मैं R1 और R2 को स्वैप कर लेता हूँ जिससे कि मैं 1 मिल जाए पहला एलिमेंट. सो 1, 2, 3, 2 minus 4 minus 3. नाउ ये 3 को 0 करेंगे, minus 4 को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस. So R2 replaced by R2 minus 3R1 and R3 replaced by R3 plus 4R1. So a equivalent matrix will be 0. A equivalent matrix will be 0 minus 4, 0, 5 plus 4R1 will be 8 minus 3 plus 5. Now we will take this element A22 और इसकी हेल्प से इस 5 को 0 कर सकते हैं. So इधर 5 इधर 4 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए. तो R3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें और R2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं. दोनों में अपोजिट साइन इसलिए ऐड कर देते हैं. So ये R3 का एलिमेंट नीचे वाला 0 हो जाएगा. 1, 2, 0 minus 4,
0, 0. Now this is echelon form and the rank of A equal to 2 equal to number of vectors, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 vectors दिए थे, so given vectors are linear independent. So given vectors are linearly independent. अभी हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी है. So पहला शॉर्टकट मेथड देखते हैं. First, if E1, E2, EM are M tuple vectors. M tuple vectors means number of vectors is equal to the cardinality of each vector, or you can say order of vector, row wise. For example, E1 is equal to 1, 2, 3, E2 is equal to 4, 5, 6, and E3 is equal to 7, 8, 9. नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो 3 है, एंड कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एंट्रीज. कार्डिनलिटी ऑफ एवरी वेक्टर इज आल्सो 3. सो या ये कहें ऑर्डर ऑफ एवरी वेक्टर इज 3 क्रॉस 1, रो वाइज भी 3 है. सो इस केस में हमारे पास अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हैं. So we have matrix m cross m, now square matrix, क्योंकि ये सारे जो वेक्टर्स हैं E1, E2, EM वो m टपल अब हो गए हैं. तो take the determinant of this matrix. If the determinant of this matrix is non-zero, then the vector will be Li. If the determinant is 0, then vector will be Ld. इसको चेक कर सकते हैं इसी एग्जांपल को हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से. आइए चेक कर लेते हैं. चेक E1 is equal to 1, 2, 3, E2 is equal to 4, 5, 6, and E3 is equal to 7, 8, 9 are LD or Li. So we can see that shortcut method फर्स्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं. यहाँ पर 3 वेक्टर हैं और हर वेक्टर की कार्डिनलिटी भी 3 है. तो मेक ए डिटर्मिनेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Write column wise first. Then it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and both the determinant are same. Actually, it is a transpose, and transpose determinant and determinant of A is same, but I am going to find column by column. So determinant of A is equal to plus 1, 45 minus 48 minus 4. रो 1 के along अगर मैं expand कर दूं रो 1 के along, then it is 18 minus 24 plus 7, 12 minus 15, so it is minus 3 plus 24 minus 21, it is 0. So the given vectors are LD. So the given vectors are LD. So this is a special case when the tuple and the vectors are same, it will become an square matrix. We have another shortcut method, method 2. For given 2 vectors, this method will work only for 2 given vectors. Let E1 and E2 are 2
two given vectors and you want to check LD or LI, so let E1 is written as some scalar time E2. Let E1 is written at some scalar time E2. Is any scalar. If this scalar is unique, then it will be LD. If this is not unique, then the vectors will be LI. For example, E1 is equal to 1, 5 and E2 is equal to 4, 20. Check LD and LI. You can go determinant method also, by determinant method also, but this is a very shortcut method. So write E1 is equal to some K times E2. Then it will become 1, 5 equal to K times 4, 20. Then it will be 1, 5 equal to 4K, 20. Compare ordered pair. So it is in the variable, so we can compare 4K equal to 5. So K equal to 1 by 4 and K equal to 1 by 4. So K is unique, bitwise unique. It must be bitwise for all entries. So these vectors are LD. So these vectors are LD because K is unique. Take another example. Example 2. E1 is equal to 4, 3, 2 transpose and E2 is equal to 12, 3, 4. Check LD or LI with the same method. So let E1 is equal to K times E2. Then E1 will become 4, 3, 2 transpose equal to K times 12, 3, 4 transpose, or you can write 4, 3, 2 equal to 12K, 3K, 4K. Now compare each entry. So 12K is equal to 4, it will give you K equal to 1 by 3. And 3K is equal to 3, K is equal to 1. So K is not unique. No need to check for third entry. Hence, E1 and E2 are LI. Hence, E1 and E2 are LI. One interesting result is, I'm not going to discuss the result. Any combination of vectors can be LI over scalar belongs to real number LI, any combination of vectors is LI over scalar belong to real number can be LD, linear dependent, over the field of complex number. So any set of vectors can be LD or LI also according to the selection of scalars. I'm not going in the detail of the field from where scalars are coming, but this is a very important result. You can search over it and understand the beauty of LD and LI of vectors. So this is my assignment. See this and complete this proof. Okay, thank you. In the next class, we will study system of linear equations.